what I could not do, or I think that I'm good at it, तो मेरा बच्चा भी होगा, ऐसा नहीं होता है. तो मुझे लगता है unreasonable expectations नहीं डालने चाहिए. At the same time, I'll just tell the name. So this father is Uddalaka Aruni. He's a very famous sage in Chandogya operation, and the child is called Shwetaketu. So he's become very famous across the world. He's known. But when he comes back after finishing his brahmacharya ashram, his father realizes कि नहीं ये सब तो सही है, but इसमें बहुत arrogance आ गया है, इसमें अहंकार आ गया है. And the father realizes कि no, then he won't sustain for a long. ये तो बहुत short-lived success रहेगा और ये आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा. And then there's a story behind it कि how he transforms the child. So that is what I'm saying. Father is also, or a parent is also a very good mentor. Even if you're going for a corporate job, you're going for startup, you're going for a government job, your interpersonal skills, your soft skills, your communication skills, your when we talk about social awareness, everything comes in picture. तो ये चीज़ें तो जो हैं ये non-compromisable है, चाहे आप across the industry कहीं भी जाना चाहें, आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहें. गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत हेक्टिक होता है, जो इंटरव्यूज होते हैं बहुत ही इंटेंस होते हैं. Salam, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to the first episode of Beyond the Lectures Campus Insights. I'm so excited to introduce our guest today, Dr. Puja Rai. She is the Chief Operating Officer of KC College of Engineering and Management Studies and Research. She comes with a 20 years of experience into education industry. And guys, ये episode आपके लिए 3 अलग हिस्सों में आएगा. Currently, enjoy it from the student perspective. See you and stay tuned for the next episodes. Hello ma'am. Hello. A very warm welcome to the first episode of Beyond the Lecture Campus Insight. What we're going to try and do is today, we will try to understand a student journey. हम ना एक student की journey पहले ना जानने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. एक engineering student जब वो उसकी एक नया life शुरू करता है या फिर उसकी एक नया career शुरू करता है, it's his first year. Okay, that's absolutely his first year. Yes. Now, as an academician, what exactly are the expectations of institutes or academic institutes to be very precise? एक student कैसा होना चाहिए जो first year में आ रहा है, जो बहुत raw student है? Right. So thanks for having me here. जब हम लोग एक फ्रेशर की बात करते हैं, एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट स्कूल में बस स्टेप इन कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आइडियली तो देखिए, आइडियली स्पीकिंग एवरीवन वांट्स द बेस्ट ऑफ द क्राउड, राइट? However, normally we get a very mixed crowd. We have all kind of students. So even when I'm going for their induction speech, I always tell them, कि आप में से 2-3 तरह के लोग होंगे. एक जिन्होंने choose करके engineering आए हैं. There would be a section who would have been forced into engineering because their parents thought this was the best line. There would be some who could not decide what to do, and because most of the friends are going for engineering, let's do this and then figure out. So what I tell them कि but now you're here. Despite the fact whether you've taken this decision solely, whether you agreed with this decision, whether this was your parents' decision, अब fact ये है कि आप यहाँ आ चुके हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ है कि there are 2 things that we tell the students at the very start कि आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आइए कि अब हम यहाँ आ गए हैं, and maybe I was destined for this and I have to make best out of it. Absolutely. So 2 philosophies. Today morning also I told my induction students that 2 philosophies in life you must remember. Things which are not in your control, do not ponder about it, do not worry about it, accept it, move ahead. And secondly, I tell them that choose your battles very very wisely. हर छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्ट नहीं करना कि टीचर ने ये बोला तो प्रिंसिपल ने ये रूल्स बनाए तो ये डिसिप्लिन के रूल है. We had thought college would be like this is how. So you have to choose. Cognitive energies आप सबकी लिमिटेड हैं, तो कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, where you have to react how and how positively. So we tell them this very first aspect, that academics will be taken care. Teachers are there, mentors are there, industry experts are there. But the very basic thing that we require from students is
a very very positive attitude. Absolutely. तो आप क्या सोच के आ रहे हैं, आप कितने ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं उस आइडिया को, और you have to be very very open to the ideas that your teachers, your mentors, industry experts बहुत आते हैं in the 4 years of curriculum. A lot of alumni come and interact with you. So we require a kind of openness and an attitude of acceptance. And also, as I said at the first start, कि अब आप यहाँ हैं, तो ये किसकी भी डिसीजन हो, own it now and move ahead. अब तो आ चुके हो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. When you have paid the fees, you are already there, you are there in the campus. अभी it's better that you adopt, okay? Make the maximum utilization of the same. Absolutely. So I completely agree to this, ma'am. I mean, yes, अगर एक बार आ चुके हो आप, तो वो उसके साथ चलो. और पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन वी हैव कम और वी हैव come over a pandemic kind of a situation where they have gone through online classes and all that stuff. अभी offline classes है, so बहुत सारी adjustments और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है उन्हें. But yeah, be positive about it. Say that okay, yes, I'm destined to be here and take it further. अब जैसे हमने कहा मैम, the student starts his journey. बहुत रॉ स्टूडेंट आया है आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने सेट की. अब वो जाता है सेकेंड ईयर में. ओके, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जाता है, what exactly do you think that student should, the best way of opening herself or himself would be participating in various cultural activities, internal college activities, बहुत सारी एक्सटर्नल इंट्रा कॉलेज एक्टिविटीज होती है, एंड ये सारी चीजें. Do you think it is important for everybody to participate there in whatever sense? Exactly. Now coming to this point, just before this I'll tell you, when the students are in first years, we tell them that you have made a very big transition from 12th standard to straight away engineering curriculum. तो first year में हम उनको बोलते हैं please focus on academics. क्योंकि the first year if you gain the confidence of engineering curriculum, so you will be more confident by the time you reach second year. So generally we tell them not to do a lot of experiments in first year. Just get a feel and hold of the new syllabus, new topics, new concepts that you're being introduced as an engineering graduate. By the time then to second year, now that you've sailed through the first year, we tell them that now along with academics, now you have to have that task of handling everything, all other events and co-curricular activities. So this is something which is very significant for a life of a professional student, or any course that a student is doing, a graduate student. It is a very very important aspect of their life. I tell them, see, when you go for your placements, and you will tell your one who's hiring that I had leadership skills, I had conflict resolution skills, and they'll ask you, how do you know that? So how do you define that? Then you will, when did you face that? तो आप बताते हैं कि I was a member of a club and I was leading a team, then I had to do a lot of conflict resolutions between the team members. And overall, apart from academics being the foundation, you need to top it up. टॉप अप तो करेंगे ना आप उसको. केक है बहुत सुंदर सा, आइसिंग के बिना तो अच्छा लगता नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स, द वेरियस एक्टिविटीज दैट यू विल द सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स, द वेरियस लिटरेरी क्लब्स, कल्चरल क्लब्स, द स्पोर्ट्स क्लब, दे विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी एज अ होल. So when we are into a journey of making a professional or a person, so it's not that I only want to know your coding skills. We are hiring a proper human being. We're not hiring a machine to do coding, right? So I need to know what is your EQ, how well balanced you are, can you interact with the team, आप conflict resolution कर सकते हैं क्या आप किसी program को, किसी event को plan करके execute कर सकते हैं. So all these experiences you will gain through the various clubs and committees, and it's not necessary that everyone needs to be the head of the committee. Team member also adds a lot of values. Participation is necessary. So वहाँ पे क्या बहुत खुल के आते हैं. आपकी आइस ब्रेकिंग एक रियल तरीके से होती है with your teachers, with your friends and seniors. So that is how you start getting identified.
कि अच्छा that child will contribute here. That is how your teachers identify you. Absolutely. So I think it is very not only it must be done, मतलब it must be done. It's a very very significant aspect of you growing up as a full graduate or a full personality. Absolutely. और मैम इसकी वजह से ना आपके सोशल स्किल्स पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है. Absolutely. Yes. आज के ज़माने में जो हम सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना आपका इंस्टाग्राम पे सीमित नहीं है. It is not just Instagram. No, I mean, as per the stats, I guess 81% of recruiters recruit individuals or give a job opportunity using LinkedIn profile. Yes. Okay, looking at the LinkedIn profile, Yes. job. I'm talking about not even job, interview opportunity. Okay, so if you are social enough, if you're participating in this kind of cultural activities, external, internal, clubs, and all that, this gives you a humongous exposure out in the market, not just within your college or campus, but beyond. Right. Beyond your campus. So I'll add it here. So by the time a student is in second year, we compulsorily tell them, through their mentors, through their class teachers, कि by this time now you should have your account in LinkedIn, because I know you have been on Instagram since your school days. Okay, so Instagram is going to be there in their life. I know that, but now you need to take out some time and develop, also project to the world about your professional accolades, your achievements, what you are thinking. आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के जो लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं LinkedIn पे, follow them, make a network. So by second year we also guide them, you know, how your social media presence needs to be professional and that you should do through LinkedIn. Absolutely. तो हमारी बहुत कोशिश रहती है कि बच्चों को बताएं कि भाई it's a power. LinkedIn में for a professional it's a powerful platform and you must come there, showcase all your talents. वहाँ से बहुत सारे participation events उनको मिलती है, the curricular and co-curricular events, and also you can showcase. So the recruiters are there all out on LinkedIn looking, because everyone wants the best for their companies, right? Not just best, ma'am, but I also believe that आपका एग्जिस्टेंस तो दिखना चाहिए, कहीं पे तो एग्जिस्टेंस बैलेंस अप्रोच. एब्सोल्युटली बैलेंस. मतलब इन सारे जो आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उससे ये दिख के आता है कि यू हैव अ वेरी होलिस्टिक एंड बैलेंस अप्रोच. एब्सोल्युटली. एंड यू नो, इफ आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि सी, इफ आई एम अ रिक्रूटर, what will I look in for you? You will say, ma'am, I'm technically very good, but my emotional quotient has a problem. I can't deal with people. I can't deal with social. I don't need you. Because we need people who can help me in various aspects and help themselves also. अगर मुझे किसी अपने एम्प्लॉय को बार बार संभालना पड़े तो एक टाइम पर मैं परेशान हो जाऊंगी, right? So EQ, SQ, these things will only come up when you're coming up and opening up in these various events and activities, and just participate. Forget about winning or losing. Just participate. Absolutely. So ये तो हो गया सेकेंड ईयर. अब मुझे this is my opinion and this is what I think, मैम. सबसे इम्पोर्टेंट ईयर एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, या फिर एनी कॉलेज. हम लास्ट ईयर उनका नॉर्मल हमारा जो बैचलर्स होता है उसमें लास्ट ईयर होगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर इज, हमने अभी तो एक ट्रांजिशन किया है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम अ 12th स्टैंडर्ड टू अ न्यू जर्नी टू अ सेकेंड एक्टिविटीज में ये गए. बट ये जो जर्नी होगी जो थर्ड ईयर की, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नी फॉर अ स्टूडेंट, बिकॉज he or she is going to get exposed to internships, exposure to corporate world, and so on. So what do you think? I mean, if अगर कोई भी स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर इंजीनियरिंग हो या फिर थर्ड ईयर बैचलर्स वाले जो नॉर्मल हमारी स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, what are those aspects which you think that are more important for them to become more employable or more their employability? So we were talking about IQ, we are talking about SQ. Okay, now we are talking about EQ is not just emotional quotient but your employability quotient. Okay, so how it is important for a student to work on their EQ when they enter into the third year. Right. So see, this third year, as you rightly said at the start, is a very, again it's a very critical year. Like we tell first year that आपको एक feel आ जाए कि engineering क्या है, आपको एक confidence आ जाए. फिर second year में आके suddenly आपको लगता है we are very good and participating here and there, academics भी चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही है. But by the time then second year, third year, suddenly एक लगता है कि oh my god, now by the next semester the companies would start coming
and then people are seeing us कि अगले साल क्या plan है, where are you, what are your dream companies, so what is it that you're planning after graduation. So suddenly, third year आते थे engineering या any, now the graduate course is also going to be 4 year. The graduate courses post NEP will be implemented. So the third year marks is a very, very crucial stage where, a very smooth transition needs to start happening as a student towards a professional. तो ये एक ट्रांजिट स्टेज जो कि बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि आपके पास अभी पूरा थर्ड ईयर है, अभी आप फाइनल ईयर में भी जाओगे, यू हैव सम टाइम देयर, बट द माइंडसेट नीड्स टू स्टार्ट चेंजिंग फॉर अ स्टूडेंट, कि अभी मुझे एक स्टूडेंट के हिसाब से रहते रहते साथ में आई ऑल्सो हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, बिल्ड माई सेल्फ लाइक अ फ्यूचर प्रोफेशनल. तो जहाँ पे कि आप फिर अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं, देन वी स्टार्ट टेकिंग द वेरी सीरियसली कि अभी तक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के सेशंस थे, हमने अटेंड किए नहीं किए, now they become serious about it. Then we also tell them right from the third year, now start focusing on which companies, or which kind of, are you planning for a startup, are you planning to go for higher studies, are you planning to go for some placements, corporate placements, what are your dream companies. तो अब उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, उसके बारे में आप पता करिए, ट्राई रीचिंग आउट टू द सीनियर्स इन दोज फील्ड्स, एलुमनाइज एंड द सीनियर लीडर्स ऑफ दोज इंडस्ट्री. तो एक बड़ा स्मूथ सा ट्रांजिशन इस फेज में जिस बच्चे ने कर लिया थर्ड ईयर में, कि मुझे अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो स्टूडेंट वाली जो फीलिंग होती है, एक ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए, सोच लेंगे, देखा जाएगा, तो वो फीलिंग्स आप धीरे धीरे टुवर्ड्स लिटिल बिट मोर सीरियस प्रोफेशनल स्टेप की तरफ आप बढ़ते हैं, जहाँ आप सीरियसली एवरी डे, एवरी सेमेस्टर यू नीड टू थिंक कि व्हाट एक्स्ट्रा कोर्सेज आई हैव डन. एकेडमिक्स तो चलेगा, हर बच्चा एकेडमिक्स कर रहा है, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा. सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वेरियस कोर्सेज दे शुड डू. देन इंडस्ट्री एक्सपोजर इज वेरी वेरी रेलेवेंट एट दिस स्टेज, ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव दैट इट स्टार्ट हैपनिंग एट सेकेंड ईयर, मे बी इन अ स्मॉल डोज, बट अल्टीमेटली बिकॉज द फाइनल आउटपुट जो आपका 4 ईयर के बाद है, जहाँ आपको पहुँचना है, वो आपको पता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फर्स्ट ईयर का करिकुलम हो गया और बच्चा थोड़ा इंजीनियरिंग में सेटल हो गया, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इंडस्ट्री exposure should start happening. But third year it has to be a very very big level and intense, because your internships really matter, how well you're going to perform with your placements and how well the placement companies are going to pick you up with the type of internship you've done. How genuinely and seriously you do internship is another important thing, because that is what you will speak out. When you go for your placements, they will ask you what on-job learnings you've done. So, they should understand that just getting a degree or a certificate of internship is just not going to help them. Absolutely. Right. So, you need to have something which you can talk about. This I've done. This is what the people on the other side of the fence needs to hear. Okay, this child, whatever he has done very seriously, learn something. Learning ability दिखता है उससे कि हाँ internship में भी मैं कुछ सीख के आया, तो वो आपकी learning ability, learning attitude दिखाता है. This is what people are hiring for, absolutely, right? Absolutely. So third year needs to be a very very, as I said, a very smooth transition needs to be done from a student's life towards a professional life and getting geared up for it. Like a lot of subjects are there. Project management होता है, हर colleges, हर professional degree में पढ़ाया जाता है. Most of the students take it very leisurely, project management, but the employers or the people outside are looking for it कि भाई आप technical skills के अलावा आपको project management समझ में आता है क्या, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या, डू यू अंडरस्टैंड बेसिक गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, डू यू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस है आपको, बिकॉज यू वर्किंग सस्टेनेबिलिटी, आर यू टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस. सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कॉन्सेप्ट्स बाय द थर्ड ईयर यू शुड स्टार्ट एक्वायरिंग, ऑल्दो यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ इट एंड नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू, you should know but that. you should be aware about you should it. be aware of that. So this is what we tell them कि अब इस कॉन्सेप्ट्स को आप डिस्कस करो, and that is why I tell them that tech news and general current awareness needs to be on your mobile. You please have Instagram, you please have all other Snapchats and everything, but you must subscribe to one news channel where you get latest, because you go into technology and you say I do not know what's happening in the world. I want to become a AI and ML person, but I do not know what's happening, professional, but I do not know what's happening in that world. So ये awareness बहुत ज़रूरी है, और ये transition जो है ये third year से बिल्कुल शुरू होना चाहिए. Absolutely. In my 20 years of professional career, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे. Okay, I might have interviewed lakhs of candidates as of now and so on. और मैं in my entrepreneurship journey, when I'm training somebody,
especially aspiring job professionals, मैं सबको ये कहता हूँ, guys, please create, बहुत बाबा आदम के ज़माने का तो ये है, but please create a goal sheet. You should have your short-term goals, you should have your long-term goals. उसका SWOT analysis बहुत जरूरी है. I mean, सब कहते हैं यार कितना पूरा SWOT analysis है, goal sheet, short-term goals, long-term goals, क्या important. But if you start preparing, you will have a clearer and focused approach कि बॉस मुझे करना क्या है आगे. Exactly. See, बाबा आदम के ज़माने का concept doesn't mean कि हर concept बुरा है. There are a lot of concepts which are still running in the system and they are sustainable and they are required. उनको हम कितना भी हम modern हो गए, there's so many things that has not been moved out. अब education system आपका कितना change किया? We are still into formal education system, right? So, goal के बारे में another thing what I strongly tell all these students whenever I go for their mentoring is that you should have a plan for the day. क्योंकि लंबे गोल तक सस्टेन करने के लिए तो you're too young. I don't know what all you'll forget in a day. But are you just start with a basic thing that are you starting for every day? Do you have a plan for next day? A to-do list kind of. To-do list. तुम to-do list ही बना लो. अपने आप तुम्हारे long and short सब goals बन जाएंगे. क्योंकि क्या होता है कि every day should not be like कि I move with the flow. I know being in flow is a very good concept that has come from the Japanese book Ikigai में. But being in the flow किस चीज़ है? जब आप कोई काम कर रहे हो उसके flow में आप रहो. But you should not be like कि मैंने कुछ सोचा नहीं, कॉलेज गए, आ गए, फ्रेंड्स ने बोला वहाँ चले गए. मतलब there should be a planning. And the other thing that I tell them that not a single day should go where you have not acquired anything. भले आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही scribble it down. I mean, just mention it down कि मैंने आज ये मैंने अचीव कर दिया and this is what I have learned. एक छोटा आपका इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ही आपको नया पता चला हो, but there should not be a single day when you have not learned anything. So वो जो आपका pile up होगा ना time when you have not done so many things, so that time is limited for everyone. You cannot go back and get it. People have been doing so many things and somewhere see whatever we say कि don't take stress, आप anxiety मत लो, race नहीं है, but ultimately let's be very frank, जब हम job market में बच्चे उतरते हैं तो there is a kind of cutthroat competition. Absolutely. So ये कह देना उनको, बता देना कि नहीं it will be okay, all cool, don't be, no, it has to come and they have to face it. तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि जिस टाइम तुम टाइम पास करते रहे, बैठे रहे, हफ्ते गुजारते रहे, उस वक्त कोई बच्चा कहीं है जो constantly he is updating himself and there you will be losing your race against him. And he'll be known. That person who is doing it, he'll be known to the entire world. So to the entire world, yeah. So people have started, those who have made their names, पता है हम उनको देखते हैं जर्नी तो बोलता है wow so smooth. No, there's been a lot of effort put at the back. तो वो हम नहीं देखते हैं कि भाई जो आइसबर्ग के नीचे क्या है वो कोई नहीं देखता, आइसबर्ग कितना ऊपर है you're seeing. So they started very early and they had one thing if you'll see most of the successful people, that every day they have done something. हर दिन का उनका प्लान होता है. तो मैं उनको ये बोलती भाई तुम रात में डिसाइड करो, इफ़ यू लेट नाइट पर्सन, अर्ली मॉर्निंग पर्सन तो मॉर्निंग में डिसाइड करो इतने लेक्चर्स हैं, ये मुझे करना है, ये मेरा कोर्स चल रहा है, आई हैव टू गिव 20 minutes टू दैट कोर्स, आई हैव टू टेक दिस एग्जाम, आई हैव टू वर्क ऑन माई CV, आई हैव टू वर्क फॉर अ कमिटी, बट डू समथिंग. मैम, just out of sight, I'm not sure how this thought process is going to impact the entire conversation, but I'm also a parent. Okay, I'm sure you are also a parent. Yes. Does parent also play a very important role in this? Very important. I very very strongly believe that parent also has a very important role to play. See, क्या होता है कि एक बहुत strong चीज़ मुझे लगती है कि unexpected, unachievable targets and expectations बच्चों पे डालना नहीं चाहिए. वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. See, even we had parents, they also had parents. तो मुझे ऐसा लगता है कि as a parent आपको जो main role है, as a parent you should ensure that your child is safe. As a parent, you should ensure that the child's curriculum, health, education के लिए जो भी आपको necessary requirements है, that is taken care. As a parent, you should see that your child is emotionally secure. As a parent, you should see कि उसका logical reasoning जो develop हो रहा है वो बिल्कुल develop हो रहा है. आप उसको एक बड़ा interesting तरीका है जिसमें कि आपको उनको freedom देना भी है और control में भी रखना है. जब उनकी formative years होते हैं, it is like a पतंग, कि पतंग को लग तो रहा है कि बहुत उड़ रहा है, लेकिन you have to किसी हाथ में है, किसी के हाथ में है, डोर किसी के हाथ में होती है. तो वो जो है ना, वो हाथ जो होता है वो पेरेंट का होता है कि आप उड़ने दो उसको, बिकॉज अगर आप उसको लाइफ में एक्सप्लोर करने नहीं दोगे और अगर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी रखोगे, रेस्ट्रिक्टिव रखोगे, तो वो
बेचारा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगी मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो उसको आप उड़ने दीजिए, आप उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, बट हैव योर द कंट्रोल एंड कमांड इन योर हैंड फॉर सम टाइम, टिल दे आर इन स्कूल, एंड स्कूल से सिर्फ कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी एक ये कॉन्सेप्ट पेरेंट का कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा रहा तुम्हारा दिन, फ्रेंड्स कैसे हैं तुम्हारे, यू शुड बी नोइंग देयर फ्रेंड्स, एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड दैट एवरी पेरेंट आजकल जहाँ दोनों लोग वर्किंग हैं, दे डोंट हैव टाइम. I also go tired many a times in the evening, and even if they want to tell me a story, I'm like, okay, we'll talk later. But at least I ensure that next morning I call her. And weekends में आपको कितना भी लगे कि नहीं, I have to catch up with some old friends, but then we, like, as a parent, you ensure that you give them a very good quality time. Absolutely. तो parents have a very big role. और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अपने what I could not do, और I think that I am good at it, तो मेरा बच्चा भी होगा, ऐसा नहीं होता है. तो मुझे लगता है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस नहीं डालने चाहिए. एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे बड़े इम्प्रैक्टिकल भी हैं, दे आर इनटू देयर ओन सोशल मीडिया वर्ल्ड. तो ये पेरेंट का ना एक वही पॉटर वाला जो ये अगेन बाबा आदम ज़माने का कॉन्सेप्ट है, बट यू हैव टू शेप दैट इनिशियली. एंड और मुझे एक और चीज़ लगता है आतिश की, जिन घरों में या जहाँ आप बच्चों को बहुत पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चे पढ़ लेंगे, स्कूल है, करिकुलम है, ऑनलाइन कोर्सेज का ज़माना है अब तो आप बच्चों को ना एक इमोशनल और एक सोशल सिक्योरिटी दें. तो अ चाइल्ड हु इज इमोशनली सिक्योर, हु इज सोशली सिक्योर ना, देन दे हैव कॉन्फिडेंस टू टेक ओवर. Absolutely. This could also be if you have a very friendly kind of an approach, because in today's world it is very important for us to know what my child is doing when he is going outside, because he or she is going to be spending around 8 to 10 hours, more than that, in today's world. So even if he or she has gone through something, स्टेटस से लेकर हो या फिर एजुकेशन से लेकर हो, अंडरस्टैंडिंग से लेकर हो, कम्युनिकेशन से लेकर हो, सारी चीज़ें, unless you do not have that friendly aspect. So that is, as I said, I mean, I'm not sure, though we were talking more about the journey of the student, but यहाँ पे parent का भी बहुत important और रोल है, that's why I thought that of highlighting this. तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँगी भाई, when you said कि 8 घंटे बच्चा बाहर है, there is also one more concept that I tell you कि आज बच्चा अगर घर में आपका बाहर नहीं भी गया है ना, तभी भी आपको लगता है मेरा बच्चा घर पे, बट इनसाइड हिज रूम और हर रूम शी इज कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो अभी एक ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई आप घर में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, सैटरडे संडे बच्चा मेरे पास था, वॉज बिजी ऑन द लैपटॉप और द सिस्टम, आई वॉज बिजी विथ माई ओन वर्क, बट नो, इवन इन द हाउस, जो कि पहले नहीं हुआ करता था. हमें पहले हमारे पेरेंट्स को पता था घर में तो घर में ही है, कहाँ जाएगा, वही न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ेंगे, टीवी में भी बड़े लिमिटेड प्रोग्राम्स आते थे. सो अभी क्या है कि पेरेंट्स नीड टू बी मोर अवेयर. नाउ इट्स मोर टफ टू बी अ पेरेंट इज व्हाट आई फील, एंड इट्स इक्वली टफ टू बी अ चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि हमारे टाइम में इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे. तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, तो हम करते भी क्या. और अभी क्या है, बेचारों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. यू हैव मोबाइल में, यू हैव OTTs एंड सो मेनी वेब सीरीज रिलीजिंग, देन यू हैव ऑल दीज चैटिंग साइट्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ना, देखिए गलतियाँ बहुत लोगों से होती हैं और बहुत कॉमन है गलतियाँ होना, क्योंकि वो एक एज है जब आपको लग रहा है कि हम ये भी एक्सप्लोर करें, आई एम बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, तो गलतियाँ करेंगे बच्चे. लेकिन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट द चाइल्ड शुड कम एंड स्पीक टू यू. और इवन इफ द चाइल्ड वांट्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, जो उसको रिस्की लग रहा है, वो आपसे छुपाए ना. तो मुझे लगता है कि एक इस लेवल की ना, एक डिसिप्लिन और ओपननेस के बीच ना एक बहुत फाइन सा थिन बॉर्डर है, लेकिन आपको क्रिएट करना पड़ता है एक बैलेंस, कि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो कि सी आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस, व्हाट डू यू थिंक, या बच्चे से कुछ गलती हो गई है तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसमें वो कन्फाइड कर सके. तो मुझे लगता है आतिश, ये रिलेशन बिल्ड करने में टाइम लगेगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम एक जनरेशन पहले के लोग हैं, तो हमें भी बहुत सारे अपने वैल्यू सिस्टम्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऐसे कैसे. बट यू हैव टू, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट योर चाइल्ड शुड हैव द कॉन्फिडेंस. और इंजीनियरिंग ठीक है, मान लो आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, आप इंजीनियर नहीं हो, आपने नहीं की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बट इट्स नॉट, वी आर नॉट आस्किंग टू गो थ्रू द चाइल्ड्स नोटबुक, वी आर ट्राइंग टू आस्किंग टू गो थ्रू हिज मेंटल पेजेस, कि हाउ इज ही फीलिंग, हाउ इज ही डूइंग, इज ही नॉर्मल. मदर एंड फादर आर द बेस्ट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे का मूड स्विंग्स है तो क्यों है. तो आई थिंक वो अलर्टनेस आपको अपनी बच्चे के साथ रखनी पड़ेगी. सो पेरेंट का, आई मीन विल सी दैट एज we would probably conclude this, that it is equally important for a parent's intervention in
in the success of a child's? Very important. In fact, I'll Career. tell you that parent is a very important mentor. पेरेंट की जो मेंटरिंग है ना वो लगातार चलती है. आपके स्कूल के टीचर आए गए, आपके कॉलेज के फैकल्टीज आएंगे जाएंगे, एंड आगे भी आप प्रोफेशनल लाइफ में यूल कीप ऑन चेंजिंग कंपनीज और सीनियर मेंटर्स, और आजकल जो पीयर बडीज का कॉन्सेप्ट है वो सब चेंज करेगा. बट पेरेंट इज वन मेंटर जो कि कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है. एंड यू नो वी हैव वेरी लवली स्टोरीज, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टाइम आई माइट नॉट बी एबल टू टेल यू. वी हैव अ वेरी लवली स्टोरी फ्रॉम छांदोग्य उपनिषद, इफ यू नो, वेर यू नो वन ऑफ अ वेरी फेमस फादर, a sage, who understood that his child had gained all kind of academic achievement in the world, और बहुत फेमस हो गया था बच्चा. और rather than when the child comes back to his father after spending his 12 years or so in with his guru, तो बहुत फेमस हो गया था वो बच्चा. जगह जगह डिबेटिंग प्लेटफॉर्म पे वो वाद विवाद प्रतियोगिता में जीत के आता था. सो आई जस्ट टेल द नेम. सो दिस फादर इज Uddalaka Aruni. He's a very famous sage in Chandogya Upanishad, and the child is called Shwetaketu. So he's become very famous across the world. He's known. But when he comes back after finishing his Brahmacharya ashram, his father realizes कि नहीं ये सब तो सही है, but इसमें बहुत arrogance आ गया है, इसमें अहंकार आ गया है. And the father realizes हाँ कि no, then he won't sustain for a long. ये तो बहुत short-lived success रहेगा और ये आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा. And then there's a story behind it कि how he transforms the child. So that is what I'm saying. Father is also, or a parent is also a very good mentor. जो बाहर वाले नहीं देख पाते हैं ना streaks of problem or streaks of personality changes, वो parents बहुत आसानी से देखते हैं. So they have a very big role as a mentor. Absolutely, absolutely. All right, ma'am. So, ma'am, we spoke about एक स्टूडेंट की जर्नी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, इंटर्नशिप, रोल ऑफ पेरेंट एंड सो ऑन. अब आते हैं फोर्थ ईयर पे, द फाइनल ईयर. मैम, हाउ इम्पॉर्टेंट और कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट को फंक्शनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और उसके प्रोफेशनल स्किल्स और उनके प्रोफेशनल स्किल्स पे काम करना अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स? देखिए, एज वी डिस्कस, यू नो, द थर्ड ईयर हैज़ ऑलरेडी सेट अ स्टेज. सो जो कहते हैं ना कि जिन बच्चों ने समय को पकड़ लिया, जो हम, ये भी पुरानी बात है, तो वो जो थर्ड ईयर में समय पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने कि नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट. तो वहाँ से ही शुरुआत. मैं तो आपको राधे कहूँगी फाइनल ईयर से एक सेमेस्टर पहले जो आपका थर्ड ईयर का नेक्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर ऑफ योर थर्ड ईयर, फ्रॉम देयर यू सडनली, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यू नो स्विच ऑन किया एंड ऑफ किया एंड यू नो सडनली, सो अ स्मूथ ट्रांजिशन स्टार्ट्स. Now, final year is a time when you have lot of things, you know. एक तो आप mentally बहुत anxious हो क्योंकि placements भी होनी है, जिनकी third year में बहुत many people get their placements also in you know the third year by the time it's ending. फाइनल ईयर में तो होना ही होना है. लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डिसाइडिंग, यू नो, कि हम अगर अभी आप बच्चों से मिलोगे तो बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास. सो मेनी ऑफ देम थिंक कि अभी मैं जॉब ना करूं, पहले मैं थोड़ा हायर स्टडीज़ करूं, मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करूं. तो वट एवर बेट, आई टेल देम, वट एवर बेट, तुम कॉर्पोरेट में जाना चाह रहे हो, तुमको स्टार्टअप में हाथ साफ करना है, थोड़ा टाइम ट्राई करना है, तुमको यू एमिंग एट सम ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इन इंडिया फॉर योर हायर स्टडीज़, there are certain skills which will be non-negotiable. चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आप गेट का एग्जाम दे के PSUs में जाना चाह रहे हो, if we are talking about engineering students in particular, so there are certain skills which are just non-negotiable. तो आपने अपने फंडामेंटल्स को तो ठीक करना ही है. फर्स्ट ईयर से आपने अपने फंडामेंटल नॉलेज पे लगातार वर्क करना है. तो फंडामेंटल्स cannot be compromised, and that's why they have the name fundamental knowledge. So that is your foundation where you've already built. फाइनल ईयर में आके आप फंडामेंटल्स पे बहुत काम नहीं करेंगे बिकॉज दैट वुड बी टू लेट फॉर यू. सो देन कम्स लाइक इफ यू आर एमिंग एट इंडस्ट्री, देन एक तो कॉमन चीज़ है जैसे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, यू गोइंग फॉर स्टार्टअप, यू गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल अवेयरनेस, एवरीथिंग कम्स इन पिक्चर. तो ये चीज़ें तो जो हैं ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, चाहे आप अक्रॉस इंडस्ट्री कहीं भी जाना चाहें, आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहें.
गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत हेक्टिक होता है, जो इंटरव्यूज होते हैं बहुत ही इंटेंस होते हैं. सो दे चेक योर इमोशनल क्वोशंट, दे चेक योर सोशल अवेयरनेस, दे चेक योर क्रिटिकल स्किल्स, योर लॉजिकल स्किल्स. सिमिलरली इंडस्ट्री में होता है. तो ये तो आपके बेसिक हो गए. उसके बाद जब आपकी टेक्निकल या फंक्शनल स्किल्स होती है, वो अब आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपना यू स्टार्ट वर्किंग ऑन. लाइक आई हैव टू गो टू आई एम एमिंग एट सम ड्रीम कंपनीज. So what are the basic skills they require? If I've already done some basics on it, final top up is needed then. If I'm aiming for good gate scores and entry into PSUs, then what are the knowledge or the skills required there? Or आपको you aiming at some of the good universities for your MS program, then what are the skills needed? Then you start curating, customizing कैसे. लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है ना वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है. जैसे when we talk about all your personality skills, your life skills, your soft skills, your communication skills, and the fundamental knowledge of engineering, if we are specific talking about engineering student, तो वो तो आपकी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है. And by the time you're in final year, I don't think that is the time when you should start. Actually वो idea आपको पहले होना चाहिए. And you should start building, customizing depending on which field you're aiming at. Absolutely. I want to go for AI/ML based companies, so topping up with more and more such hands-on skills, fundamental skills, the functional skills of that. If I'm wanting to go in manufacturing sector, तो उसके जो मेरे functional skills हैं वो एकदम hands-on होने चाहिए. आपको उसके experiences होने चाहिए. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बियॉन्ड गोइंग इन द कंपनीज एंड वर्किंग. तो जो हम थर्ड ईयर में फिर हम करवाते हैं कि भाई आप जरूर समर इंटर्नशिप्स करो और सीट्स करो. तो फाइनल ईयर इज अ स्टेज व्हेन ऑल योर गोल्स, ऑल योर प्लान्स दैट यू बीन डूइंग नीड्स टू बी जस्ट accumulated and executed accordingly. Absolutely. Right. That's not a stage when you decide, because then you are probably going to miss the bus initially. Absolutely. Yeah. Ma'am, I would also like to understand one important thing. Everywhere we talk about AI is going to be there for the next 10 years to dominate. So AI का dominance रहने वाला है हर जगह पे. अब AI specific हमारी एजुकेशन पॉलिसी में से AI स्पेसिफिक सारी चीज़ें नहीं है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल. ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मतलब बहुत फेवरेट डिस्कशन है. एवरीवेयर वेन एवर आई एम हैविंग कंडक्टिंग अ पॉडकास्ट, तो मैं ये हर बार पूछता हूँ. सो आई वुड आस्क दैट विल AI टेक ओवर जॉब्स? ये मुझे पता है दैट AI विल नॉट टेक ओवर जॉब्स. You have to adopt to AI. Yes. Okay, in order to make yourself more sustainable. Relevant आप अपने आप को रखा. Absolutely. Yes. So you should not just scale. Yes. Or else you will just scale, but you should be able to. You should not be able to just sustain, but you should be able to scale yourself. Yes. In any field which you go. Yes. So, any say on that aspect from a student's perspective? एक students को AI adoption कैसे करना चाहिए और क्यों important है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हर समय में there might have been some skill that would have just come and taken over the world. तो मुझे ऐसा लगता है कि AI हर जगह it has become a buzzword. Definitely it is going to stay. It is going to change the way we live, the way we work, the way we function, the way industry functions. It is going to be there. But what more thing I feel that currently भी क्या है, because AI is the buzzword, everyone wants to do that. तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है कि डू वी ओनली नीड पीपल स्पेशलाइज इन AI, और विल AI फंक्शन विदाउट द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. राइट, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कोर इंजीनियरिंग होती है जिसको लोग ओवरलुक करने लगे हैं आजकल. कोर इंजीनियरिंग पे ही आप ये सारी स्पेशलाइज चीज़ों को बिल्डअप कर सकते हो. राइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि यू मस्ट टेक दैट इज एनीथिंग व्हेन इट ग्रिप्स द होल वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट, तो लोग उसके पीछे फॉलो करते हैं. लेकिन मुझे लगता है एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए कि व्हाट maybe as in if I do check my aptitude, I am more I have more proficiency in manufacturing sector. I will have more proficiency in basic core electronics. I will have more proficiency in say maybe manufacturing sector or instrumentation sectors. So मुझे ऐसा लगता है कि you must go if you want to, but definitely don't go because everyone is going. Everyone is doing AI. वहाँ पे stagnation आएगा.
Absolutely. हर जगह एक रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर रिसोर्सेज की दूसरी चीज़ मुझे एक और लगता है जो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, रिसेंटली देयर वाज एन आर्टिकल आल्सो इन टाइम्स ऑफ इंडिया बाय सीनियर प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ IIT, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, वेयर ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि everyone is going towards AI, ML, deep learning, this, that, but you're not understanding that जो core engineering है, जो core physics है, जो core electronics and telecommunication की engineering, electronics engineering है, वो उसकी भी ज़रूरत है, उसी पे बेस करके आप सब चीज़ों को बनाते हो, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि you must go, but you must test your aptitude for it. Just because the whole world is going AI and because there's a opening there doesn't mean that the entire world needs to be an AI specialist. Absolutely. I am a firm believer of this, ma'am. आपको आपके functional और industry specific skills पे काम करना बहुत जरूरी है, because now I'll give you a classic example. An AI professional cannot be the same for a banking industry or an IIT industry. Yes. Okay. Yeah. Or a healthcare industry or a banking industry. Right. Okay. So you need to first gain that industry and functional knowledge as well. True. Okay. वो बहुत important है, बहुत मायने देगा, and I'm sure this is what our audience is expecting from this podcast, and we're having an amazing conversation, ma'am, and we would love to continue with our conversation the way what we are having right now. We just covered about from the student perspective, हमने जो अभी discussion किया है, जो conversation हुआ है, you have been talking about from the student perspective. We will definitely come up with the second episode, which would be more from institutional perspective, right, and industry perspective. Yes. Okay, so we would love to have you back again on that discussion, ma'am. Thank you. Thank you so much. I enjoyed this discussion a lot, and I just hope that all these whatever we have been discussing, someone somewhere benefits out of these. Absolutely. Thought process. Absolutely, yeah. I'm sure it is going to be an amazing and insightful and very informative kind of a discussion what we had, ma'am. So thank you so much, and we look forward for the next Thank you next for session. having me here. Thank you. Thank you, ma'am. See you and stay tuned for the next episodes.